गुड इवनिंग एंड वेलकम टू गाना शॉट वंस अगेन। गाना शॉट में आपका स्वागत है। राइट आज मैं एक बार फिर दोहराना चाहता हूं जो हमने सिलसिला शुरू किया था इसका, ये मिलिट्री टेक्नोलॉजी ऑफ द सेंचुरी। हमने आज तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्पेस जो हमने 4 किस्सों में कवर किया था, साइबर सिक्योरिटी और साइबर टेक्नोलॉजी, बैटलफील्ड एनर्जी, इन 4 विषयों के ऊपर हमने बातचीत किया। और आज हम बात करेंगे क्लाउड मेमोरी के ऊपर। राइट एंड क्लाउड मेमोरी के लिए बात करने के लिए दोबारा हमारे साथ उपस्थित हैं मेजर जनरल राजीव नारायणन। वेलकम टू बैक राजीव। Thank you, सो sir. Pleasure to be on your show. थैंक यू। एंड आप बताइए, हाउ इज द फीलिंग ऑन क्लाउड? आर यू ऑन क्लाउड I'm 9? on cloud nine. You're on cloud 9, and we need to see where we go on cloud 9 and what we want to do, right? And let us see how uh, what this cloud is all about and what the whole thing is all about, right? And your opening ideas on this business. सर, डेटा बहुत हो गया है, डेटा हैंडलिंग काफ़ी चाहिए। अगर सब अपना अपना सर्वर लगा के बैठना शुरू कर दें तो महंगा बहुत हो जाता है मैनेज करना एट ऑल लेवल्स, वेदर इट इज़ डिफेंस, वेदर इट इज़ सिविल, वेदर इट इज़ योर कंपनीज, बड़ा मुश्किल हो जाता है मैनेज करना। मैं खुद अपने इतने सारे डेटा आते हैं, फोटो वगैरह, इतना सारा कुछ आता है। मेरा खुद का मैंने गूगल में क्लाउड ले रखा है जिस पे सेव करता हूँ। मेरा पर्सनल है, उसमें सेव करता हूँ एंड उससे निकालता हूँ। पासवर्ड प्रोटेक्टेड है और उससे मैं निकालता हूँ ताकि मेरा लैपटॉप और कंप्यूटर में स्पेस बच जाए। Right. तो ये अभी मतलब ये नए जो सिरे से निकला है, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग जो जिसका कि मिलिट्री में बहुत ज़्यादा आगे चल के इस्तेमाल मैं देख रहा हूँ कि आगे काफ़ी इस्तेमाल होगा इसका। राइट ये आपने बहुत अच्छी बात बताया कि मिलिट्री में बहुत जरूरत है और हमें भी डेली लाइफ में जरूरत है, और आम तौर पर हम इसको समझते नहीं है। पर आप यू टच द कॉर्ड, एंड द कॉर्ड यू टच्ड इज डेटा। सो लेट अस सी व्हाट इज दिस डेटा ऑल अबाउट। राइट, डेटा दे से इज द न्यू ऑयल। और ये हमारे, मैंने सुना है अपना प्रधानमंत्री को खुद बताते हुए कि जब वो आईआईटी मद्रास में आए थे 2 साल 3 साल पहले, कि डेटा इज द न्यू ऑयल। बट व्हाट इज द इशू अबाउट डेटा? डेटा इज generated today in mass, right? The amount of data which we generate is huge, but there are few things about data. It is reusable, right? But if you have to reuse it, you need to store it. It is renewable, it is creatable, and as much as it is creatable, it is also destructible, right? When you spoke something, AI. We spoke about AI last week. बिल्कुल Yeah, AI needs data. We saw how much big data it needs. Big data is a lot of data, लॉट right? And the complete digital infrastructure which supports this is called cloud, right? We all know that. To give a आइडिया कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, ये क्लाउड कोई आसमान में फैला हुआ, इट्स नॉट बादल नहीं है। इट इज दैट all the devices, when it is connected to a remote device and stored, your data is stored there, then it is called cloud. And that's all. It's all about data and keeping data with you, and rather not keeping data with you but keeping it somewhere else, like in a bank vault. So this is what it's all about, cloud. And if you have anything to say, we'll say, and then otherwise, बस and then we'll, अभी जैसे कोविड हुआ था, yeah. कोविड हुआ तो वर्क फ्रॉम होम हुआ। वर्क फ्रॉम होम इतना ज़्यादा आसान हुआ था कंपनीज के लिए क्योंकि उनका डेटा क्लाउड में है और घर से बैठ के मैं उस क्लाउड पे कनेक्ट करके लॉग इन करके मैं काम कर सकता हूँ। Correct. तो वर्क फ्रॉम होम
एक क्लासिक एग्जाम्पल निकला था कोविड के टाइम में कि क्लाउड का किस तरह से अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर वो नहीं होता तो कनेक्ट करना बड़ा मुश्किल होता कि भाई आप ऑफिस के सर्वर से कैसे कनेक्ट करते हो और वहां पे लॉग इन करके अपना काम कैसे करते राइट, एंड यू आर नाउ टॉकिंग इंटरकॉन्टिनेंटली, आप यहाँ बैठ के हो। आपका राइट ये कहीं भी हो सकता है वगैरह वगैरह, कई राइट, लोग इसलिए तो जैसे कोई इंडिया आया था विदेश से, यूएस से, यूरोप से, कोविड में फंस गए, अब जा नहीं सकते, यहाँ से वर्क फ्रॉम होम, तो यहाँ से बैठ के वो अपने यूएस या यूके या जहाँ भी ऑफिस था कहीं भी वहां से कनेक्ट करके काम कर रहा था। तो ये फायदा आ जाता है क्लाउड से कि आप कहीं भी रिमोट, बैठ के आप उसको एक्सेस कर सकते हो और आप अपना काम कर सकते राइट। सो फॉर्मली अगर बताया जाए तो यू कैन टेक अस थ्रू दिस, यू कैन हैव अ लुक एट इट हो। हाँ एंड सर, बेसिकली क्लाउड का है कि आपको कनेक्टिविटी चाहिए कि भाई सर्वर्स होते हैं बहुत सारे, क्लाउड मतलब बादल नहीं है, इंटरकनेक्टेड कई सारे बड़े सर्वर्स होते हैं और वो अपग्रेड होते रहते हैं, वो करते रहते हैं, कंपनीज अपने करते रहते हैं, वो कलेक्टिवली आपका क्लाउड का बेसिस होता है जिसके अंदर स्टोरेज होता है और वो मैं कहीं से भी निकाल सकता हूँ, किसी जगह से भी, मोबाइल से भी निकाल सकता हूँ, लैपटॉप से भी निकाल सकता हूँ। और इसका एडवांटेज ये होता है कंपनीज अपने अपने एप्स बना लेती हैं कनेक्टिविटी करने के लिए, तो वो ऐप भी इसी जगह स्टोर्ड होता है जिसको मैं एक्सेस कर सकता हूँ। मेरा डाटाबेस यहाँ पे पूरा अवेलेबल होता है जो मैं ही एक्सेस कर सकता हूँ। और इसमें तीन तरह के ये सर्वर्स होते हैं, एक विल तो टॉक प्राइवेट, अबाउट दैट लेटर, हाँ वो बाद में कर लेंगे। वे बाद में बात तो करते हैं। आप केवल, आपका केवल जो आप पेमेंट करते हैं, जैसे मैं भी पेमेंट करता हूँ गूगल को, मंथली अपना रेंट देता हूँ, बहुत कम पैसा देना पड़ता है। इट इज समथिंग लाइक लाइफ इंश्योरेंस या कि खूब राइट, सारे लोग हैं तो आपका प्रीमियम कम रहता है लेकिन कवरेज आपको ज्यादा मिलता है, तो उसी तरह ओके, से क्लाउड है, उसी right. So कॉन्सेप्ट पे है कि I'll just read through this thing. Cloud computing is the delivery of computing services, including servers, storage, databases, networking, software, analytics, and intelligence over the network और ओवर द इंटरनेट। ये माना जाता है कि नॉर्मली जो हमारा आम ये है कि भाई क्लाउड में आपको मेमोरी मिलेगा, नहीं मेमोरी नहीं, आपको ये सब मिलेगा, राइट, सर्वर मिलेगा, आपको स्टोरेज मिलेगा, डेटाबेस मिलेगा, नेटवर्किंग मिलेगा, सॉफ्टवेयर मिलेगा, एनालिटिक्स और इंटेलिजेंस, और टू ऑफर फास्टर इनोवेशन, फ्लेक्सिबल रिसोर्सेस एंड इकोनॉमीज ऑफ स्केल। यानी कि आप एक कंप्यूटर के साथ अगर आप क्लाउड के साथ कनेक्टेड हो तो आप और भी काम कर सकते हो जो आपके कंप्यूटर के बाहर है। यू आर मल्टीप्लाइंग योर रिसोर्सेस। यू टिपिकली पे ओनली फॉर क्लाउड सर्विसेज यू यूज, यानी आप उतने ही पैसा देते हो जिसको जितना आपको जरूरत है। हेल्पिंग लोअर योर ऑपरेटिंग कॉस्ट, सो ऑपरेटिंग कॉस्ट भी बढ़ कम हो जाते हैं। रन योर इंफ्रास्ट्रक्चर मोर एफिशिएंटली एंड स्केल एज योर बिजनेस नीड्स चेंज, right? This is a formal way of putting things, right? But I will take it to a little different academic way of doing things and intellectual way of doing things. And it's not my intellectuality I'm talking of. I read this book. A book hai, Tools and Weapons, right? The Promise and Perils of the Digital Age by Brad Smith, right? Brad Smith was the president of Microsoft, right? And I would suggest anyone who wants to really understand all this business, a lot of things which we talk of, read this book. Any understanding cybersecurity, read this book. The best method by which you understand and understand what a cloud is in this book. He calls cloud the world's filing cabinet. बिल्कुल Okay, सर। okay. जो हमारे Now, दर्शकगण जो क्लर्क हैं या क्लर्क के काम किए वो समझ जाएंगे, आपके सारे फाइल एक फाइलिंग कैबिनेट के अंदर होते हैं और उस कैबिनेट को अलग अलग आप मार्क करके रखते हो कि फलाने चीज का यहाँ पे इस ड्रॉर कहाँ में, है या फलाना इस ड्रॉर में, फलाना इस ड्रॉर में, आपको तो ये जब वही चाहिए है। आप वो जब चाहिए खोला, वो दराज को वापस हाँ, खोलते हो। नहीं आप, चाबी आपके पास है, आप करेक्ट, खोलोगे ताला और निकालोगे और ओके, जो कुछ चाहिए लोगे और फिर वापस डाल दोगे। वापस, राइट। अगर उसमें डेटा
डालना है तो और डाल के आप वापस कर देते हो, right? So this is what the thing is. It's a beautiful way of putting things, right? In this book, it's very simple. I would recommend many of you who this thing read it. Okay. Oh, this is a cloud data center, which is Microsoft data center in a place called Quincy, which is near Redmond, right? In this book, he describes this, uh, thing, which I'll take you through that, because हर चीज जो है ना एक कहानी में अच्छा लगता है सुनने में, नहीं, वो लोगों को समझ आ जाएगा कि जब समझ हम में आ क्लाउड जाता है बोलते हैं तो मतलब क्या है। क्या है और कहानी क्या है, ये हम बताएंगे। ओके, राइट। ये बताते हैं इसमें कि इनका जो माइक्रोसॉफ्ट डेटा सेंटर एट क्विंसी इज 12 मिलियन स्क्वायर फीट, छोटा मोटा नहीं है, ये हमारे कल्पना के बाहर है। मोर देन 20 बिल्डिंग्स, आपने देख ही लिया कि इसमें कितना बड़ा है, राइट? राइट, more than 20 buildings, each building the size of 2 football fields, big enough to house 2 commercial planes, right? Or home to hundreds of thousands of server computers and millions of hard disks, all replaced with a faster and more efficient models every 3 years. यानी कि ये जितना भी क्लाउड में कंप्यूटर हैं, हार्ड डिस्क हैं, वो हर 3 साल बदली होते जाते हैं। और ये जो पिक्चर है एज्योर डेटा सेंटर, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर जो है उनका क्लाउड सर्विसेज का, यू नो दैट्स व्हाट द क्लाउड सर्विसेज ऑफ माइक्रोसॉफ्ट आर कॉल्ड, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर। वो एक पिक्चर है अंदर, आप देख रहे हो लंबे कतार है सर्वर्स और कंप्यूटर्स का। ये भी बहुत आश्चर्य की बात है, ये बताते हैं कि आउटसाइड ईच बिल्डिंग आर लार्ज जनरेटर्स power which power up within seconds to ensure data does not skip a beat if the regional grid goes down. इसका मतलब आपको, आप सोचिए, अगर आप यहाँ चेन्नई में बैठे हो और आपका डेटा माइक्रोसॉफ्ट के क्विंसी में है, अगर वहां पावर शट हो गया तो आपका डेटा टप हो गया, वो तो हो नहीं सकता। तो इसीलिए इनके पास बड़े बड़े जनरेटर हैं, और ये बताते हैं कि इसमें हर एक जनरेटर 20 फुट से ज्यादा बड़ा है, और हर जनरेटर एक 2000 घर को पावर अप कर सकता है। इतना बड़ा जनरेटर है उनके पास, राइट? सो इट्स अ ह्यूज ऑर्गेनाइजेशन एंड सेटअप। ओके, पावर सप्लाई इज नॉर्मली अ लोकल हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेशन फ्रॉम अ पर्पस बिल्ट डैम। इनके लिए एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेशन स्पेशल बनाया है, राइट? वो मतलब आई वुड से गिव एन एनालॉजी कि ये है हमारे जो कंप्यूटर का यूपीएस है उसका काम करता है। काम करता है, राइट? ओके, और ये भी बताते हैं कि इट हैज गॉट अ स्ट्रिंग ऑफ सबस्टेशंस विच स्टेप डाउन वोल्टेज फ्रॉम 2,30,000 volts to 240 volts, and it has multiple stacks of batteries, each with 500 or more. A data center could have up to 5,000 batteries, and grid electricity first comes to batteries to prevent spike. यानी कि सबसे पहले पूरा इलेक्ट्रिसिटी बैटरी में आता है, बैटरी से लेकर ये कंप्यूटर्स में आते हैं। And it also acts as a huge UPS till all the generators come up, अब जो आपने बताया है। And there's a lot of security to go in and come out, right? क्योंकि आपका डेटा है उधर, हम सबका डेटा है, हमारा ईमेल्स है, हमारा फोटोग्राफ्स है, हमारा सब कुछ किसी क्लाउड में है जो हम इस्तेमाल करते हैं, जो हमारे नेट में है, राइट? और जो भी आप ट्रांजैक्शन करते हो वो क्लाउड में उपस्थित है, तो इसके लिए सिक्योरिटी चाहिए। What does security required? It prevents virus from going in, right? They have protocols. It prevents data theft. ठीक है, आप बाहर निकलते वक्त आप डेटा चुरा के भी ला सकते हो, तो वो स्टॉप करता है। ईच बिल्डिंग हैज कंप्यूटर्स फ्लोर टू सीलिंग, राइट, एक्सटेंडिंग बियॉन्ड लाइन ऑफ साइट। वो आपने पिक्चर देख लिया था। Somewhere amongst thousands of computers is our data, email and personal information and the transactions we do daily. यही मैं बता रहा था, हमारा जितने रोजमर्रा का जिंदगी का ट्रांजैक्शन है, आप जब भी एक ऐप इस्तेमाल करते हो, ये सब क्लाउड से आ रहा है ये डेटा, राइट? और ईच कंप्यूटर इज सेट कनेक्टेड टू 3 पावर सोर्सेस, ताकि
एक डाउन हो जाए तो दूसरा है। और हीट सर्कुलेशन इज रीसर्कुलेशन ऑल कंप्यूटर्स, क्योंकि इतने पावर सोर्सेस हैं, इतने कंप्यूटर्स हैं, और इतना गर्मी होता है कि वहां से एयर कंडीशनिंग वगैरह होता है। पर खास बात जो मैंने इसमें देखा, जो मैंने लिखा नहीं, कि आपका अगर क्विंसी में एक डेटा सेंटर है, उसी तरीके से एब्सोल्युटली रेप्लिकेटेड कहीं और एक डेटा सेंटर है। अगर कल के दिन किसी ने वजह से, राइट, each data center is 100% backed up to cater for any disaster like earthquake and hurricane. कल के दिन एक डेटा सेंटर किसी तरीके से किसी वजह से डूब जाए तो और डेटा सेंटर कहीं आ जाता है। Microsoft operates data centers in 100 locations, more than 20 countries, and delivers 200 online services, supporting more than 1 billion customers in more than 140 markets. इतना बड़ा है। डेटा सेंटर्स कॉस्ट hundreds of million dollars to build. ये एक महंगा खेल है ये, ठीक है, राइट। इसीलिए इसको समझना अनिवार्य है हमारे लिए, क्योंकि हमारे पास डेटा सेंटर्स नहीं है। मेंटेनेंस, अपग्रेडिंग, रनिंग, एक्सपैंडिंग कॉन्स्टेंटली एक चल रहा है। जैसे अगर हर 3 साल आप पूरा डेटा सेंटर का हार्डवेयर बदली कर रहे हो, आपका इलेक्ट्रिक सिस्टम्स बदली कर रहे हो या अपग्रेड कर रहे हो, तो इट्स अ वेरी कॉस्टली बिजनेस टू बी इन। इसमें एक चीज बताऊंगा सर कि अपग्रेड और एक्सपैंड जब करते हैं उसको इस तरह से करना है ताकि जो यूजर है उसको पता भी नहीं आपको लगेगा पता कि भी आप नहीं अपग्रेड चले कर कि ये सब हो रहा है पीछे। हो रहा है। आप ये नहीं है कि भाई हमारा जैसे होता है कि बिजली अभी इस इलाके में बंद है क्योंकि मेंटेनेंस चल रहा है ना, वो ये नहीं है। यो नहीं वो है, नहीं होता यहाँ पे, आप नहीं कर सकते नहीं क्योंकि कर मुझे सकते। डेटा, आप देख लो पूरा जिस मैप में सब तरफ फैला हुआ है, अलग अलग टाइम जोन में है, किसको कब डेटा की क्या जरूरत पड़ेगी, क्या काम कर रहा है, किस ऐप का यूज कर रहा है, चाहिए उसको। राइट। तो ये सब, ये इज ऑल पार्ट ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। सब सोचते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट इज द बिगेस्ट कंपनी एंड ऑल दैट। नो, Amazon Web Services also is a, it's the bigger one. मार्केट में 60 से 70% कहा जाता है कि Amazon वेब सर्विसेज का है, 20 से 30% माइक्रोसॉफ्ट का है, बाकी 10 से 20% बाकियों का है। मैं ये फिगर्स में नहीं जा रहा हूँ, बट माइक्रोसॉफ्ट इज नॉट द बिगेस्ट प्लेयर, अमेजॉन इज द बिगेस्ट प्लेयर, राइट। हमें पता होना चाहिए, अमेजॉन जो हमें रोज आके घर में आके डिलीवर करता है, जो हमारा ऑर्डर है, वो सब एक वेब बेस्ड सर्विस है जो आ रहा है। तो इसी के बारे में थोड़ा और हम जानकारी हासिल करेंगे, राइट। इससे पहले कि मैं आगे जाऊं, आप कुछ बताना चाहते हैं तो बताइए। हाँ नहीं, इसी का केवल यही था सर कि भाई आपका जो क्लाउड में डेटा है आपको डर नहीं लगना चाहिए, वो सिक्योर रहता है क्योंकि आप पासवर्ड प्रोटेक्ट करके रखते हो। एक और चीज़ है जैसे गूगल ड्राइव, वो भी क्लाउड में ही होता है। अगर मैं गूगल ड्राइव से किसी को शेयर कर रहा हूँ तो वो जब तक मैं नाम और ईमेल उसका नहीं दूंगा आप उसको एक्सेस नहीं कर सकते, आप एक्सेस नहीं कर सकते मेरा डेटा। मैंने आपको देना है कि हाँ ये मेरा डेटा एक्सेस कर सकता है। तो ये एक सिक्योर डेटा अवेलेबल होता है आपको क्लाउड में। तो जस्ट बिकॉज ये बाहर कहीं है या कहीं है, ये डर में नहीं लगना चाहिए कि जो कंपनियां चल रही हैं। लेकिन यस, जब हम अपना डिफेंस का सोचते हैं तो हमने अपना खुद का क्लाउड बना खुद के का बनाना रखना है, पड़ेगा, राइट। और खुद का हमारा रखना। ये जो बातचीत और वार्तालाप हो रहा है, ये इसीलिए हो रहा है कि हमारे पूरे फौजी भाई जो बाद में देख सकते हैं इसको, उनको समझ में आए कि क्लाउड क्या होता है और कितना पैसा लगता है और कितना कष्ट होता है बनाने के लिए। और और बिना जैन क्लाउड के शंकर ने हमारा, बताया था, जब मैं वो 3 टाइप ऑफ क्लाउड बता रहा था तो जैन शंकर साहब ने बताया भी था कि बाद में बात करेंगे, तो उसका मैं वो भी समझाऊंगा कि किस तरह से हम इसी चीज का फौज में भी इस्तेमाल कर सकते इस्तेमाल होता है, राइट। ओके, यू कैन टेक अस थ्रू दिस, राजीव, यूजेस हैं। ऑफ हाँ, क्लाउड कंप्यूटिंग वन बाय वन। यानी आपका जितना भी आसान इसलिए हो जाता है कि जो कुछ भी आपको एप्लीकेशन, चाहे वेब का हो चाहे मोबाइल का हो, आपको कोई ऐप डालना है, कुछ भी बनाना है, कम्युनिकेशन के लिए बनाना है,
वो सॉफ्टवेयर बना के आप क्लाउड में डाल दो, बोल दो अवेलेबल है और उसका ऐप निकाल दो, जो जो उसको डाउनलोड कर लेगा वो क्लाउड के साथ कनेक्ट होके आपका फटाफट हो जाएगा। आउटरीच बहुत जल्दी हो जाता है। उसी के साथ अगर ऐप शुरू किया है, आप लिमिटेड को दो, उसको टेस्ट कर सकते हो। आपको टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ता, क्योंकि आप इंटरनेट सबके पास है और स्मार्टफोन्स लैपटॉप सबके पास है। आपने सेलेक्ट लोगों को बोल दिया यार ये ऐप डाउनलोड कर दो, टेस्ट करो और बताओ मेरे को क्या बिल्डअप करना। अभी जैसे आपका मेरे पास नॉर्टन्स का वो है एंटीवायरस, वो बैकअप करता है। तो बैकअप किधर करता है? क्लाउड में क्लाउड। करता है। वहां से रिकवर भी करता है। अगर कोई प्रॉब्लम हो गया तो मैं वहां से रिकवर भी कर सकता हूँ मेरा डेटा। अगर लैपटॉप में कोई खराबी हो गई, जैसे आप अपना मोबाइल नया चेंज करते हो, आपने सेव किया, किधर सेव कर रहे हो? वो क्लाउड में सेव हो रहा है। तो जब आप दूसरे मोबाइल को साथ लेके आते हो, फटाफट आप डाउनलोड कर सकते हो। वो बताते भी है कि आपने सेव किया है तो आपको मिलेगा। सेव कहाँ हो रहा है? हैंडसेट में कम होता है और काफी क्लाउड में अवेलेबल होता है। आपके पास डेटा इतना अवेलेबल होता है कि भाई मैं उसको एनालाइज करने के लिए, बिग डेटा एनालिटिक्स बड़ा आसान हो जाता है। डाटा स्टोरेज कहाँ है? इतना बड़ा कंप्यूटर नहीं चाहिए, मैंने क्लाउड में सेव कर लिया, क्लाउड से मैं निकाल के कर लूंगा। आपका ऑडियो वीडियो स्ट्रीमिंग, आपके पिक्चर आते हैं नेटफ्लिक्स के, वो क्लाउड के थ्रू आ जाएंगे। इट विल कम वेरी फास्ट फॉर यू। बिग या डेटा ये उदाहरण के तौर पर जो हम आज अभी बात कर रहे हैं वो भी क्लाउड के थ्रू ही वो भी आएगा कल क्लाउड के के दिन। थ्रू आ रहा है आपको। आप उसके अंदर इंटेलिजेंस भी एम्बेड कर सकते हो अगर ट्रांसमिट करना है कोई डेटा। और सॉफ्टवेयर ऑन डिमांड अवेलेबल है। अगर आप कंपनी के साथ कनेक्टेड हो और कंपनी ने एक सॉफ्टवेयर वहां पे डाला है, लेटेस्ट हाइपोथेटिकली से एडोबे हम सब यूज करते हैं, एडोबे प्रो रखा हुआ है, मुझे डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। मैंने लॉग इन किया कंप्यूटर के गेटवे, कंपनी के गेटवे के थ्रू, दैट एडोबे प्रो सीधा। इज अवेलेबल टू मी। या सो मुझे दैट्स द पैसे दे थिंग। के खरीदने की जरूरत नहीं है। राइट। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज व्हाई क्लाउड। राइट, क्यों लेना ये है क्लाउड? क्लाउड बोलिए। इसलिए है क्योंकि ये बड़ा फ्लेक्सिबल है। मैंने अभी कंपनी का एक आर्किटेक्चर बनाया है, कंपनी बड़ा हो रहा है, उसी क्लाउड के अंदर मैं आर्किटेक्चर बढ़ा देता हूँ। मुझे अलग से कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। और नए एप्लीकेशंस लेके आने, क्योंकि मेरा कंपनी एक्सपैंड हो रहा है, उसी क्लाउड के थ्रू मैं नया एप्लीकेशंस जो कुछ चाहिए सारा कुछ कर सकता हूँ। एंड क्योंकि क्लाउड जो है, जैसे जन साहब ने भी बताया था, हर 3 साल में वो अपडेट करते रहते हैं। तो आपको लेटेस्ट जो भी इनोवेशंस आपको बनाना है न्यू सॉफ्टवेयर के साथ, वो आप बना सकते हो। तो ये उनका फॉर कंपनीज एंड ऑल ये काफी स्ट्रेटेजिक वैल्यू हो जाता है। और जो उसमें से काम कर रहे थे तो उन, और जो नहीं कर रहे, जो कर रहे हैं उनको काफी एडवांटेज हो जाता है बनिस्बत वो कंपनी जो उतना ज्यादा क्लाउड इस्तेमाल नहीं कर रहे। और जैसे मैंने पहले भी बताया था, बड़ा सिक्योर है। आपको इन्हें, जो आम कंप्यूटर से जैसे आपको वायरस आ जाता है, क्लाउड के थ्रू वायरस आना के चांसेस, आई वोंट से 100% निक्स है, बट 99.9% चांस आपको मालवेयर ये सब आने का नहीं रहता है। और इसीलिए बड़े डेटा को रखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कंपनियां क्लाउड का इस्तेमाल करती हैं। उससे एडवांटेज ये हो जाता है कि आपके लिए बड़ा कॉस्ट इफेक्टिव हो जाता है। बड़े बड़े सर्वर्स आपको रखने नहीं पड़ते, छोटे सर्वर से भी आपका काम चल जाएगा। ये आगे मैं समझाऊंगा, क्योंकि मैंने अपने एक हेडक्वार्टर में वर्चुअल नेटवर्क बनाया था, तो क्या दिक्कतें आई थी वो भी समझाऊंगा मैं। वो पुराना वर्जन था क्लाउड का, जो एक हेडक्वार्टर के अंदर हम कोशिश कर रहे Okay. Right. So, what are the types of cloud computing? फंडामेंटली तीन प्रकार के होते हैं। एक पब्लिक क्लाउड होता है, एक प्राइवेट क्लाउड होता है और एक हाइब्रिड क्लाउड होता है। राइट, जैसे राजीव साहब बता रहे थे, पब्लिक क्लाउड वो होता है, वो थर्ड पार्टी क्लाउड सर्विसेज होते हैं, जिस तरीके से अभी हमने बताया अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट वगैरह, और कोई आपके लिए पूरा क्लाउड वगैरह बनाता है, तो वो पब्लिक क्लाउड होता है। प्राइवेट क्लाउड वो होता है कि हम अपना खुद बनाए क्लाउड। राइट,
They are built, managed, and owned by a single organization and privately hosted in their own data centers, commonly known as on-premises, on-prem. Right? इससे क्या फायदा है? They provide greater control, security, and management of data while still enabling internal users to benefit from a shared pool of compute, storage, and network resources. Right? मैं इसके ऊपर मैं थोड़ा और uh, 2-4 minute, right, we can spend a little more, Rajiv, because this is of importance for the armed forces. Armed मैं forces तो को अगर मैं आर्म्ड फोर्सेस का लूँ सर, मेरा व्यू थोड़ा अलग है कि अभी हम इंटीग्रेशन की तरफ जा रहे हैं। तो जो इंटीग्रेटेड फोर्स है वो पब्लिक क्लाउड के ऊपर होना चाहिए, जो कॉमन है तीनों सर्विस के लिए। तीनों सर्विस का अपना प्राइवेट क्लाउड होना चाहिए। और so you're जहां not actually, आप yeah, कंबाइन कर रहे हो कि भाई मेरे को दूसरे के साथ मेल मिलाप करके कुछ बातचीत करना है, वो हाइब्रिड में आ जाएगा कि भाई मैं शेयर करना चाहता हूं, जो जरूरी लोग हैं वो शेयर कर लेंगे। तो right, उसमें मेरा एक ग्रिड आ जाता है इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर्स के साथ कि भाई पब्लिक क्लाउड है जो नॉर्मल जो इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर्स में घूम रहा है और ऑन डिमांड जिस जिसको चाहिए क्या चाहिए वो ले सकता है। प्राइवेट क्लाउड इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल सर्विस का है, जो उसके अंदर अपने बना सकता है किस किस को क्या क्या जाना है, किसको देना है, किसको नहीं देना है, किसको जरूरी ऑन नीड टू नो बेसिस आप इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हो। और हाइब्रिड है जो मेरे हिसाब से प्राइवेट डिफेंस में प्राइवेट और पब्लिक क्लाउड को जोड़ के रखता है। right. So what you actually brought out, I think we'll spend a little time on this because strategically speaking, the larger picture of having cloud services within the armed forces. So you need first and foremost a policy as to how you're going to handle cloud हाउ यू, and data, बिल्कुल right? बिल्कुल How are you going to handle data? How are you going to handle your apps? How are you going to handle your software? कैसे आप अपना पूरा कंप्यूटिंग सर्विसेज को रन करना सिस्टम। चाहते हो? आपको एक मोटा पॉलिसी चाहिए, and this policy has to come out from the MOD or the, you know, what shall I say, your CISC or the सीडीएस। Combined Defense Staff, CDS, right? So a CDS has to lay out, right? Your Chief of Defense Staff has to lay out a policy and allow each service as to what they can hold, what कैन they होल्ड। should not hold, and what he holds for the service, all three services, and what all three services have an interactive system with the public cloud. So will it be fair if I put it, अगर हम बताएं कि for the armed forces, some part of the armed forces must be on public cloud, यस। some part of the armed forces has to be completely on the private प्राइवेट clouds, क्लाउड and some part has to be in ऑन a हाइब्रिड। hybrid mode, right? बिल्कुल। Bilkul. So wherever there's a public interaction which is required, you have to go on public cloud, right? यस, Which is दैट्स व्हाई आई सेड इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर्स है हमारा, सिस्क yeah, है, सीडीएस है, वो एमओडी से इंटरेक्ट करते हैं बहुत। और उनको बाहर से भी इंटरेक्ट करते बाहर से हैं, डीलर्स के साथ से भी सबसे interact इंटरेक्ट करते हैं. करना पड़ता है, वो पब्लिक So you क्लाउड have to होगा। be on a public cloud, यस right? And that has to be interconnected with some kind of a hybrid system. And that यस hybrid system has to be at the integrated headquarters level or यस। integrated staff level with connectivity to services, and services can have their own public clouds. And Oh, as sorry, we private move cloud. toward, yes, and as we move towards theaterization, that maybe the hybrid clouds could shift towards the theater headquarters also. Theater headquarters, right? So, but of course, we are actually, जैसे हम बात कर रहे हैं, we are only talking नहीं, इसके theoretically maybe, but theoretically, but thinking. इसको सोच के So, उन्होंने they have to start start work on thinking of this. it. Yeah, Start that's thinking, the they got point. to work, they have to identify where all will they create these clouds, locations कहाँ होंगे, how Yeah, will they provide all those yeah. backup, that generator and everything that you spoke about, Spoke how will about. you hide it
from your Ah, enemy, and how will you make a backup out of it? How will you yes, man it? man How it will you किस go तरह से, about doing everything? And yes, how will you integrate all this cloud with other strategic systems in your country? in your country. Because the way I look at it, it is not only that we should look at armed forces, हम आर्म फोर्सेस से थोड़ा और बाहर सोचने की जरूरत है एंड पब्लिक टॉक क्लाउड अबाउट जो है, स्ट्रेटेजिक सिस्टम्स. आपके सीएपीएफ हैं हु कम टू यू, उनके साथ या आपके डीआरडीओज हैं, आपके डीपीएसयूज हैं, काफ़ी कुछ है जिस आपके, अभी हम वी आर डूइंग दिस आउटरीच विद द एकेडमिया, तो दे विल आल्सो कम ऑन टू दैट सेम या पब्लिक क्लाउड. या and you सो have to get knowledge. You see, we यस, let's तो be clear, we don't have that knowledge to do all this, so you have to have your partners, you have to develop partners to do all who this will, business. and why should only uniformed people be sitting there to run it? No, You in fact don't I will. need. Yeah, so you have to be very clear that you have to have a whole lot of one little three words which we use, civil military fusion. यस, बिल्कुल. एक हाँ, और ये बात मैं यकीनन बता सकता हूं, मेरे ख्याल में ये सोच विचार कहीं मैंने आज तक सुना नहीं. आपने सुना? नहीं. तो ये बहुत कमी है हमारे अंदर, इसीलिए हम ये बाहर बात कर रहा हूं. इसीलिए मैंने ये मिलिट्री टेक्नोलॉजीज ऑफ दिस सेंचुरी के बारे में बात कर रहा हूं, क्योंकि इफ यू डू नॉट हैव दिस टेक्नोलॉजी ऑफ हैंडलिंग योर ओन डेटा and you allow someone else to handle it, that data is not yours. It is No. insecure. And that data is of no use to you. वो फिर डेटा विल नॉट बी ऑयल, वो डेटा जो है वो रेत बन जाएगा आपके इंजन के अंदर. ओके, नाउ वी विल गो वन स्टेप फर्दर और देखते हैं कि जो थोड़ी देर पहले जनरल राजीव बोल रहे थे, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ क्लाउड सर्विसेज, राइट? You can take it on again, Rajiv. We can, you know. वन इज कि भाई, you can be each of them separately, or you could have all combined also. Infrastructure as a service कि भाई आईटी सर्विस, कंप्यूटिंग, स्टोरेज, नेटवर्किंग, वर्चुअलाइजेशन, जो भी है. तो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर आपको मिल जाता है सारा कुछ, और उस पे आप केवल उतने का लेते हो, बाकी आपके पास है. दूसरा है कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर तो कर ही रहे हो, यू कैन यूज प्लेटफॉर्म आल्सो एज अ सर्विस, कि भाई आपके जो कुछ भी क्लाउड एप्लीकेशन के डेवलपमेंट आप करना चाहते हो, तो उसके लिए जो कुछ चाहिए, और एप्लीकेशन किस तरह से आपको बर्डन नहीं आएगा, वो आपके लिए तैयार करके दे देगा. कोई स्पेसिफिक टाइप आपको चाहिए, हार्डवेयर एंड एप्लीकेशन एंड डेवलपमेंट. एंड थर्ड इज सॉफ्टवेयर, कि भाई आपको सॉफ्टवेयर डेवलप करके चाहिए जो इस तरह के आपके सिस्टम्स के लिए सही चलेगा, आपको चाहिए उस तरह से, तो वो भी आप कर सकते हो, या तीनों के लिए आप काम कर सकते हो, कि या आप इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी मांग ओके, सकते हो, प्लेटफॉर्म भी चाहिए आपको, सॉफ्टवेयर भी चाहिए. तो ये सारे सर्विसेज अवेलेबल हैं आपको क्लाउड में, जो आपको चाहिए आपके रिक्वायरमेंट के मुताबिक आप ले सकते हो. एंड वही बात दोबारा मैं दोहराऊंगा. इन द आर्म फोर्सेस यू नीड अ पॉलिसी as to what kind of infrastructure you want to use, offer as a service. Because अगर क्लाउड सर्विसेज आपके पास है और आप एक प्राइवेट सेटअप बना रहे हो, प्राइवेट क्लाउड बना रहे हो, तो what kind of infrastructure you have to want to build and offer, what do you need, what kind of a platforms are you going to work on, right? And what kind of software services you want for yourself. So वो ही you नहीं सर, कहाँ कहाँ से आप डेटा वहां पे ला रहे data, हो, क्या right? सैटेलाइट से ला रहे हो, यूएवी से आ So रहा है, you have किधर to से look आ at, रहा है. you have to look at huge communication systems and यस, data channels. And with data channels come the fact that you need to ensure data security, and you need to ensure data routing, and you need to ensure whole lot of, you know, data highways, also along all these highways you need access control, who will be access able to control, access it. right?
and You who will know, be able to access this and who will be able to control that data flow. control. Okay, because at the moment you look, हम सब बोलते हैं नेट सेंट्रिक वॉरफेयर. नेट सेंट्रिक वॉरफेयर का मतलब क्या है? राइट, नेट सेंट्रिक वॉरफेयर का मतलब ये है कि we are all connected on the net. We have your own net. That net could be a private net, right? A isolated net. For example, if you have a fire control net, you're networking all fire control resources, you're networking all observation resources, you're networking all ammunition resources, you're networking all other resources Other to resources. act in sync, right? You're working, getting data out, you're having observers, and these chaps are across the border, some in satellites, somewhere, wherever, right? Our across, for in a core, you could have these chaps around about 1,000 places. Now, all these chaps are networked to act as one. Now, all their data has to go somewhere and come somewhere, right? From somewhere, it has to go to some other place and has to come to the gun to fire. And this gun has to go and fire on the target. And all this has to go through एंड the इट ऑल्सो एड्स टू द लॉजिस्टिक चेन कि भी मेरे को पता लग जाता है पता कितना लगे एम्यूनिशन निकल या गया है, मेरे को डिमांड भेजना है कितना एम्यूनिशन, किस टाइप का, कितने चार्ज, कैसे आना है, कब तक राइट, पहुंचना है और कहाँ कहाँ पहुंचना है, जाना है. कहाँ कहाँ जाना है. And what, not only that, it will also have to tell you what kinds of roads are there, यस. what kinds of vehicles you have to send in, what packages you want to send in, because the kerosene which you send to Siachen will be in jerry cans, whereas kerosene which you want to send in the desert will be somewhere else. The water you send in desert has to be in jerry can or a pipeline. Whole lot of things are there. And if you want to go net centric and you don't have cloud, you're out. Managing that data is just not feasible there. It's not feasible, right? I think, I mean, I personally think that somehow we've not thought of all this. We've just not thought of all this. And that is why we are bringing it out. भाई हम तो बादल को नीचे ला रहे हैं. सिंपल आपकी है सर, मर्जी है. बैटलफील्ड मैनेजमेंट सिस्टम, इतना या सारा डेटा जनरेट होता है उसमें, उसको मैनेज करना, किसके पास जाना, कितना डेटा जाना, किसके पास जाना, वो जब तक आप क्लाउड के साथ बैठ के काम नहीं करोगे आप नहीं कर सकते, आपके बिल्कुल नहीं कंप्यूटर हो जल सकता. जाएगा. राइट. ओके, यही जो अभी पहले बता रहे थे कि सॉफ्टवेयर इज एन एप्लीकेशन, हाँ. सॉफ्टवेयर इज अ प्लेटफॉर्म, सॉफ्टवेयर इज अ इंफ्रास्ट्रक्चर. एक लाइन डायग्राम में बताया, एप्लीकेशन के नीचे देखिए मॉनिटरिंग, कंटेंट, कोलैबोरेशन, कम्युनिकेशन और फाइनेंस, ये सब कुछ है इन्वॉल्व. If you are using a platform, you say object storage, identity, runtime, queue, database. Okay. And if it's infrastructure, how do you compute, block storage, and network? And all this connection is through desktops, laptops, all kinds of servers, whatever it is. These are the You external, have smartphones, you have tablets. whatever. Yeah. Whole lot. Right. And this conceptually, हमें ये जरूरत है कि in the armed forces we think of it, right? And because conceptually we have not thought of it so far. We've always believed that someone else, कोई और करेगा काम ये हमारे लिए. In हमें today, क्लियर होना चाहिए कि हमको किस तरह का चाहिए. कोई चाहिए बाहर से आके काम करे लेकिन उसको बताना है हमें चाहिए क्या. क्या, चाहिए क्या. राइट, या आप जो बोल रहे हो बिल्कुल सही बोल रहे हो. ये कोई आर्मी वाला नहीं करेगा या एयरफोर्स वाला नहीं करेगा, करेगा तो और कोई, इट विल बी कॉन्ट्रैक्टेड टू समवन. The whole running of this could be, in a secluded बट यू हैव environment, टू but बी क्लियर, इट इज समथिंग लाइक अगर मैं एक शर्ट खरीदने जा रहा हूँ मुझे पता होना चाहिए कि मैं बुश शर्ट खरीदने वाला हूँ, फुल स्लीव शर्ट खरीदना है, कैजुअल पहनना है, फॉर्मल खरीदना है, क्या खरीदना है. क्या खरीदना है. अगर राइट. दूसरे को बोलना भी है दुकानदार को वहां से खरीदना, मैंने उसको बताना है मेरे को क्या चाहिए. या ऐसे थोड़ी बोल सकता हूँ कि कुछ दिखा दो. I agree with you completely. Right. At this point, I'll just take a small detour. I'll request all of you to subscribe to Gunner Shot, because unless more people come on to the thing, you will not learn. You will not learn. We are going on 2 tracks, and tomorrow I'm going to analyze the 2 sessions. Right. I'm going to switch from completely from technology into strategy. And the whole idea of Gunner Shot is to give you a wide bandwidth, where you can appreciate military technology,
and geostrategy. Anyway, that's a later day story, right? The next part हाँ, is, yeah, यही था अभी जैसे cloud computing क्लाउड network. कंप्यूटिंग लेफ्ट पे दिखाया मैंने, Yeah, राइट में पुराना एक कॉन्सेप्ट शुरू हुआ था और मैंने कोशिश भी की थी, टू सम लेवल इट वाज सक्सेसफुल इन आवर हेडक्वार्टर्स, डिव हेडक्वार्टर्स वेयर आई वाज कमांडिंग। प्रॉब्लम ये होता है कि भाई हर जगह ये होता है, अगर आप हर जगह आपके पास सर्वर पड़ा होता है तो कोई भी आके अपना यूएसबी पोर्ट में पेन ड्राइव लगा दिया या हार्ड एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव लगा दिया और उससे आपको मालवेयर वायरस वगैरह आ सकता है और चांसेस है कि भाई सेंसिटिव इंफॉर्मेशन निकल सकता है। तो उसमें लेफ्ट में मैंने एक किया था कि भाई सबके हार्ड डिस्क हार्ड ड्राइव्स हटा दिए थे, केवल सेक्शन जो था मेरा डिपार्टमेंट पार्ट्स थे हेडक्वार्टर में, एक पार्ट का बॉस और उसका नंबर 2, उन्हीं के पास अपना सीपीयू था, बाकियों के पास केवल वर्क स्टेशन था, मतलब ये कीबोर्ड है आपके पास एंड यू हैव द स्क्रीन, एवरीथिंग वाज अवेलेबल। एक सेंट्रल सर्वर रखा था जो नंबर 2 जो होता था, जैसे ए ब्रांच में किया था, एजी के पास था, वहां पे पार्टीशन करके रखा था कि हर एक सेक्शन के क्लर्क का वहां पे वो उसका सेव डेटा वहां पे होगा और उसको कोई चीज की जरूरत नहीं है, एक सेंट्रल सॉफ्टवेयर खरीद के वहां लगा दिया था। तो इट वाज समथिंग लाइक हार्डवेयर, जो मैंने सेंट्रल सर्वर अपना एंटी सर्वर होता था उन दिनों 2011-12 की बात कर रहा हूँ, 11 12, yeah. एंटी सर्वर लेके पार्टीशन करके वो कर दिया था। जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो क्या था, हमने इससे बात किया था सिग्नल्स के साथ, और वो अपना ओएफसी का एक जेलीफिल्ड केबल अवेलेबल होता था, तो वो जेलीफिल्ड केबल के साथ सबको कनेक्ट कर दिया था। एंड प्लेटफॉर्म वाज द वर्क स्टेशन। जो एप्लीकेशन था, जब वो सॉफ्टवेयर था, वो सॉफ्टवेयर सारा मेन सर्वर में था, which was generally available, one partition from where, which was the main place where all software was available, whatever was required। जो भी सिग्नल्स भी दे देता था कि सर अब ये नया सॉफ्टवेयर आया है इसको चलाने के लिए, तो वो भी वहीं पे डलता था। तो टू सम डिग्री इट वाज सक्सेसफुल, बट महंगा बहुत पड़ा था। Yeah, it's, आई वाज yeah, नॉट एबल टू yeah. Look, रेप्लिकेट इट I ऑल I ओवर। completely agree with you and I empathize with you because you did something which is ahead of time, right? No, it What is was ahead of expensive time? because Yeah, when it is we tried expensive. to replicate it with the G branch, int branch, and Q branch, we realized that it was going way beyond our budget. Yeah, I Way, way, agree with way you. beyond our budget. It is just to indicate that how cost effective cloud comes. Cloud तब आया नहीं था. Cloud आता तो it would have been much better. It would have been Yeah, so cost effective. right. So let's talk a little about cloud security, because if you're going to put data all over and far away from you, there's a whole lot of security which is required. मैंने पहले भी बताया था कि security is there when you go into a data center and when you come out of a data center, because two main things in cloud: data theft and data corruption, Correct. right? And virus. It's not only virus, it's also misrouting of data is also an issue. Rerouting and retrieval of data is also an issue. So that again, let's say, said data corruption. So when you talk of cloud security, it's a shared responsibility for security. You need data encryption. You need user identity and access management. Not everyone can access every data. Okay, you need collaborative management is between the user and the chap who's holding the and the tires in between, right? And you need security and compliance monitoring, which is very important, right? So these are the things which are, I think, highly important, which we need to put in place before we think of a cloud system for the armed forces. Some defense So, applications, Rajiv, take us through. this was some thoughts that I had, that since big data analytics आता है, तो I can get it from uh, satellites, from UAVs, and from various places. The data comes in, and there is a seamless connectivity of sending these data. Then it enhances your situational awareness.
of the people on ground, the troops on ground, the commanders on ground are able to be aware in a near real time. I won't say in real time, but it's near real time. They are able to aware. Seamless sharing hota hai of data across the architecture, because once you lay down the protocols, the sharing is seamless. आता है वो चला जाता है automatic. Command head, जो biggest problem you always find is because of these huge setup of computers and everything that you have, it gives out बहुत ज़्यादा electromagnetic signatures देता है जिसको छुपा नहीं सकते. लेकिन अभी क्या होता है कि भाई क्लाउड में सारा कुछ है और आपके पास छोटे छोटे वर्क स्टेशन होते हैं, तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फुटप्रिंट है, जो आम एम्बियंट नॉइज फुटप्रिंट बाकियों का भी होता है, उसी के साथ होता है. तो आपको पकड़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है. ये नहीं कि पकड़ नहीं पाएगा, बट पकड़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है. केवल वो जो एंटेना वगैरह है उसी से पकड़ेगा आपको. जो आपका आईटी सिक्योरिटी और रेजिस्टेंस टू साइबर अटैक तो बता चुके हैं, क्योंकि आपके पास डेटा और सब कुछ आपके पास, शेयरिंग ऑफ डेटा, ऑर्डर पास करना, सब कुछ जल्दी हो जाता है. तो जो भी टास्क आपको करना है, आप उसको थोड़ा बेहतर और जल्दी कर सकते हैं, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली आपके पास आता है. बिग डेटा तो बोल दिया मैंने. लॉजिस्टिक चेन्स, जैसे एक हिंट बताया था मैंने कि भाई नेटवर्क हो जाते हैं आप, तो वो लॉजिस्टिक नेटवर्क भी आ जाता है. तो किसका कहाँ कम हो रहा है, किसके पास है, कहाँ पे है, वो सारा कुछ आपका बहुत जल्दी सप्लाई चेन में आ जाता है और लॉजिस्टिक सप्लाई चेन को काफ़ी एफिशिएंट कर देता है. और जो स्टाफ में है, जो लोकेट करना चाहते हैं कौन कहाँ गया है, किधर गया है, वो भी इजीली आप कंट्रोल कर सकते हैं कि किसके पास कहाँ पहुंच गया. एक्सेस कंट्रोल की बात हो चुकी है. बट बिगेस्ट, जैसे मैंने इंडिकेट किया था, जो वर्चुअल नेटवर्क मैंने हेडक्वार्टर में ट्राई किया था, कि भी वेट, साइज, वेट, पावर, कॉस्ट सब कम हो जाता है, लेकिन डेटा हैंडलिंग का वॉल्यूम और उसको कंप्यूट करना मल्टीपल टाइम्स बढ़ जाता है. और जो आपका कूलिंग रिक्वायरमेंट, पावर रिक्वायरमेंट आपको हेडक्वार्टर्स में चाहिए, वो यहाँ नहीं चाहिए. आपको चाहिए जहाँ पे आपका डेटा है, क्लाउड जहाँ पे आप बना रहे हो. और क्लाउड आप कहीं भी बना सकते हो, जरूरी नहीं है कि बैटलफील्ड के पास बनाना है. आप दूर बना सकते हो, दूर बनाओ, राइट. जहाँ आड़ में छुप सकते हो वहां बना लो आप. आपको अगर कोई टनल करके अंदर बनाना है, उसके अंदर भी बना लो, कोई फर्क नहीं पड़ता. Yeah. So it's a very important subject which we have tackled, which very few of us in the armed forces and uniform really understand this, right? And we all many times, in fact, more many times, 100% of the time, we don't focus on this at all, right? But if we are going in for tomorrow for AI, you're going in for net-centric warfare. You're looking at quantum computing. When quantum computing comes in, the requirement of your cloud will Data. just multiply, right? And if you're looking at cyber security in a big manner, you have no choice but to understand cloud technology. यही नहीं कि you don't, it's not a matter of just understanding cloud technology. You need to have a policy for cloud technology, and you need to have an implementation schedule for cloud technology. And cloud technology is a very costly business. Unless you have, you indigenize it to a large extent. And I don't see this business of Atmanirbharta as part of this. Have you seen it anywhere or heard of it? सर, आत्मनिर्भरता में अभी वो चिप बनाने के पीछे पड़े हैं. वो बन जाता है वो तो ठीक है, लेकिन क्लाउड आपको, यू हैव टू लुक फॉरवर्ड. केवल चिप मतलब केवल ये नहीं कि आप अपने मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन के लिए बना रहे हैं. आपको ये यूज़ करना है कि मैंने अपने क्लाउड के लिए सर्वर सारे तैयार करने हैं, कहाँ कहाँ किस किस जगह. हर जगह आपको क्लाउड कर बना के देना पड़ेगा. अब मेन तो हम तो डिफेंस का देख रहे हैं, तो बहुत ज़रूरी है कि अगले 10 साल के अंदर अगर हमने ये तैयारी नहीं की, हम पीछे रह जाएंगे. पीछे रह जाएंगे, राइट. आई थिंक यू पुट इट ऑन द मनी कि अगर हम अगले 10 साल के अंदर एक क्लाउड अपनाएंगे नहीं, तो हम पीछे रह जाएंगे.
right? इसी बात पे Naveen has got a question. Thanks, Naveen, for your 400. I mean, I must tell all of you, whatever money you give is going to go for a good cause. It's not going to go into anyone's pocket. That I can assure you, right? Because the whether you give it here or you give it for during other talks, it'll all go for a good cause. Okay, General Sirs, thanks for coming together for this session. Thanks a lot, Naveen. Naveen is a person who comes Regular. often on, yeah. In terms of talent pool in cloud security, there is abundant domestic supply. Do you think the forces should hire in house or contract out to third parties under NDAs? Uh, yeah, your view, Rajiv. Then after that, सर I'll take. आई स्टेटेड इट ड्यूरिंग जब मैं एक्सप्लेन कर रहा था, इन हाउस मत जाइए, have a Yeah, combination and get in more from out from the domestic. You have domestic. people, Yeah, get them in on a contract with you, and sit yeah, together you and do control it. the cloud. You control Yes, the cloud. अगर आप but control building करो the cloud cloud का, has to be done by them. yeah, Protocols मैं सेट करूंगा, किस तरह से उसको प्रोटोकॉल को अमल करना है वो सिविलियन yeah, करेगा. yeah. I agree with you completely. Uh, right. Given the scope, okay. Oh, Venki has got a cheeky thing. Given the scope of disruptive application of this technology in the military, I'm sure someone from PLA is watching. I hope he does. Right. Yes, of course they would be. Okay. Raghu asks, Sir, cloud computing is revolutionary in logistics sector for both civil and military usage. Your comment on India, Yes. we explained. There's no doubt. If you don't go in for cloud, you forget your logistics, and it's going to be the most complicated logistics. And what has the Ukraine war taught us? If you're going to, What has Amazon teaching you? Look at it. yeah, It's a huge logistic movement, and he set up a cloud for it. That's why he's maximum. yeah, If I am looking at fund five to go to 5 trillion, 10 trillion, 15 trillion economy, look at the amount of logistics and supply chain movement I have to control and look yeah, after. If you yeah, don't have cloud, just forget it. forget it. Right, all your integrators, you look at your Uber or Ola, and anyone who's integrating, what's it doing? He's relying on cloud. Similarly, tomorrow, if your army logistics pan India have to come up to scale, right, you need to have cloud. And what's more, you if you use cloud intelligently for logistics, then you'll know exactly what you need to stock. You make logistics lighter, and you make logistics less costly. You see, one of the problems, let me explain it to you a little more in detail, because this is an important question. And you see, you have ammunition stocked all over India, right? And a whole lot of ammunition. And we don't fight wars daily. Every day, a lot of ammunition is just being burnt off. Ammunition which you got 20 years back, 30 years back is being wasted out. Now, if you have cloud, you exactly will know how to handle that ammunition, when to extend its life, when not to extend its life, upgrade it, XYZ. I just take an ammunition. The same thing is applicable for greasers. The same thing is applicable for any item. Many times you don't even know an item is lying in some place. Okay, I remember one, my GOC, right? When I was this thing, he used to command an armored brigade in Ratnochak area. So he had a particular type of a gun which was going out of service called Abbots. During Op Vijay, his brigade had Abbots, 105 British guns थे. उसके spares नहीं मिलते थे. So one day he sent a whole lot of people from that unit to the ordnance depot and said कि भाई वहाँ जाके देखो कि वो सामान है ही कि नहीं. And lo and behold, he went there and produced two Abbots more. उतने spares थे. राइट. दो एबेट निकला है, और उसके बाद उन्होंने वो पूरा जो ऑपोजिट का लिए जो तैयारी था लड़ने के लिए क्षमता उनका बढ़ गया. सो दैट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ क्लाउड टू हैव ऑल दिस, not only stored, automated, and all that, right? It can be brought into battle at the right time. That's the Because we are moving criticality. towards digitization,
So when you are Yeah, moving towards digitization, the more you go towards digitization, the more data you will get. data you And that uh, data you will need a cloud to store it to be able to better handle and compute. compute. Yeah, I agree completely, right? And to have dedicated strategic computing resources perpetually running, the country would need reliable and redundant, yeah, power source. What is the outlook for the next generation nuclear power facilities? Look, Abhishek, you need to have a overall view of this, a large scale view of the energy. We spoke of the battlefield energy requirements. Let me, if you think back in that video, I would suggest all of you go back and relook at that video, okay, on battlefield energy. What were the kinds of energy we spoke of? We spoke of renewable energy, right? We spoke of fuel cells. We spoke of hydrogen, energy, hydrogen based energy, and we also spoke of nuclear energy. We also spoke of thorium based energy, for which India has got plenty, and space based energy. So you need to have an energy plan if you're going to go in for things like cloud, right? You can't take a cloud setup into Northern Command at the foothills of Himalayas and expect it will work with what it is. One earthquake and the cloud center will go, and everything will go. Yeah, The go best ahead. part is to keep it away from the battlefield area, Yeah, because it will generate a lot a of lot of electromagnetic signature. footprint which you can't hide. So So you need to protect it and have a dedicated power source, like what you showed about Microsoft. There was a hydropower plant which was dedicated for this. So you got to look at a place where you can create something renewable energy source, and backup generator you cannot do without. It needs to have that backup, so you because the have to data have can't be all this. lost. Yeah, you have to have a plan. It's a macro plan which you have to have, and that is why you see now. I hope those of you who are seeing understand why we took battlefield energy. People who spoke of yeah, battlefield energy क्या होता है, वो तो एक बैटरी लगाओ तो कहीं से बिजली आ जाएगा. It doesn't happen. Tomorrow's battle, we have to think of all this, right? Okay, right. Next question, or yeah, AWS says AWS Azure works on public network for people and business, but armed forces need their own networks. Your command, yeah, I said we have to You get into mentioned. net centricity. There are plans for us to have our own dedicated networks, and if you have dedicated networks, I mean, I'll put the flip. If you want to have dedicated networks, you need cloud, your own cloud. Yes, Okay. we had mentioned about that. Maybe Yeah, you joined a little later. That the armed forces has to have a dedicated network, and I had mentioned that for the tri-service, that is the integrated headquarters, CDS, MOD, and everything, you need to have it public within them. Public within them. doesn't mean anybody from the public will get it. It is Yeah, public within them plus others, and certain areas will be permitted to civilians to log in for tendering and for whatever they have got to do. The three services have their own private cloud, because they are going to do everything for the three services. And as we move in towards theaterization, and even before theaterization, they will be at up to certain level where a certain hybrid crowd would be created, because at a particular level, whether you decide it's going to be at the divisional level, brigade divisional, or the corps level, where you interact with all three services, there the hybrid will be there between private and public for them to share information. yeah. It's a look. It's tomorrow's way of thinking, right? Unfortunately, let me put it across. This has been my problem, that our country at times, thinks segregated. We are not able to do. Why should I depend on a cloud which is sitting in Quincy, right? We should be able to do it on our own. Atmanirbharta isi mein hai. Core services we need to do. We if need to the do our. if the government of India has a policy for this, देखिए, एआई का पॉलिसी निकाल लेते हैं, साइबर सिक्योरिटी का पॉलिसी, किसी ने क्लाउड के बारे में सोचा ही नहीं, right? If you leave the cloud for people to do what they want, it's like wild west. कुछ भी कहीं भी कुछ कर लो, मोरिना के में जाके जिस तरीके से डाकू लोग काम करते हैं, ऐसे हो जाता है काम, right?
So anyway, that's on a philosophical note, but that's a fact. That's we are India, and we should not shy Defense away has from to have telling. its own network because you don't know at time of war what will happen. Yeah. Ajay, it's good to know that normal people like me get to see our lively generals live and get Thank you, knowledge from Ajay. them. Thank Love you, you. sirs, and Jai. Yeah, look, we have spent our whole life for this nation, okay, and we know nothing else. Okay, that's our first seek. जो हम all of us, both of us, we would have left our houses when we were 15, 16, 17 years old, and we exited when we were 60 plus, right? And we've learned a lot. The army, the navy, and the air force teaches us a hell of a lot, and different. Rajiv's knowledge base will be vastly different from my knowledge base, right? His experiences will be much more Experiences are very different. bit It's so different, but vast, all each that level. has to be all that has to come together somewhere, and put together, and we have this is our time to repay back to the nation. That's why I keep saying, please give this to all your friends. I'm trying to open a window, a two-way window for all of us to understand the armed forces, and for the armed forces to interact with people, right? So uh, I do hope someday people will understand that, but that's a different story. Anything else you have? Yes, that's Right, that's it. once a cloud comes in, Yeah, I'm sure if people push for it, cloud should come in into India. There is more than adequate requirement for cloud now coming in. yeah, Look at the amount of digital payments and everything that has taken place. So, cloud should come in, and it makes it easier for all these secure for your fintech, for yeah. blockchains which are considered secure. Cloud becomes a very easy place to save your blocks and other things. It Right, is something phenomenal that you get, and it is cost effective. If everybody is going to create his own with his server, it becomes very expensive. right. Thanks a lot for all of you. Tomorrow I'll get back. Hereafter, I'm going to get Gunner shot at 8 o'clock. Whether I do it daily or not, I'll have to get into a rhythm. But generally, we'll go live hereafter, and we'll do it at 8 o'clock in the evening. Tomorrow, I'm going to do a peek into China, and I'm going to analyze the two sessions and where it's heading. Right. So see you tomorrow. Please spread it to your friends, and I'm going to make it Sure. very interesting because a lot of interesting things are coming out of those two Yes. sessions. Yes. It Right. gives the future course of the Future course of bull in the action. china shop. Yeah, bull. Let's say China in the bull The shop. bull is she, Bull and see. china Yeah, shop, you know she and what. the bull. Okay. Right. Thanks a lot. Good evening and Jai Hind. Giants. Jai Hind.